Sachin, just check once. It's not waiting. I've already set up. Just check it once. I'm already. It's 11 o'clock. Yeah. Vishal, can you just take off your screen sharing for the initial portion? Yes. Done. Okay. Is it showing full screen? It's not yet showing. Yeah. Okay. All right. Good morning and welcome to today's session. Electricity futures, no wires, no power delivery, just price. This, this isn't about supplying electricity, but electricity futures are financial tools for price discovery, risk management, and trading, not just energy delivery. And to help us understand this powerful intersection of energy and finance, we're joined by a leading expert in the space, Mr. Vishal Pandya. He's the co-founder and the managing director of REConnect Energy, a climate tech startup offering industrial AI and smart grid technologies. Through its platform, Grid Connect, REConnect Energy offers predictive analysis, which is for renewable demand and price forecasting, and automated dispatch for energy scheduling, billing, deviation settlement, and payment accounting. Renewable energy developers, transmission companies, and for distribution companies. So REConnect Energy is a 175 member organization serving 3,500 renewable energy projects and 18 electric utilities across India, Southeast Asia, and the Middle East. And Vishal is an alumnus of IIT Bombay and St. Cross College, Oxford. He's an electrical engineer and a fellow of Chevening Research, Science, and the Innovation Leadership Fellowship. And we welcome you, Vishal. So let's start off today. Thank you, Jeffrey. Good morning, everyone. So Vishal, we'll keep a little bit of conversational, and we're gonna ask you a couple of questions for the webinar. So how is the electricity market different from equities or the commodity markets? Right. So, electricity, we all can see and feel it from the presence point of view. We can't touch it. दूसरी बात यह है कि you cannot differentiate electricity. Unlike any other commodities or equities, there is a color to it, right? What's the quality? What's the characteristic? There is nothing of that sort in electricity. The third aspect is even when the transfer or the spot delivery happens, fundamentally it's a financial settlement. The flow of electricity doesn't follow the law of transaction. It follows the law of physics, right? So the electricity will flow based on the voltage and where the connectivity is, not because you and I decide to transact. So the settlement of electricity, अगर देखा जाए तो पहले से ही by design financial transaction है. And now the derivatives will take it one step further, जहाँ पे without taking physical delivery of electricity, आप market में you can play around in terms of betting for the price or against certain price. So what are the key risk factors in the price movement of electricity? Yeah. So price, now when you look at, first we have to understand the market structure. इंडिया का जो टोटल कंजप्शन है सिर्फ 6.5 से 7% मार्केट में जाता है at power exchanges, and in that the reference price what we have taken, the day ahead market, spot market we call it, of Indian Energy Exchange, 99%, 98-99% market share is held by IEX. About 7% of electricity what we consume at a national level gets traded there. तो उसके रेफरेंस से प्राइस डिराइव करेंगे डेरिवेटिव्स के लिए. IEX में प्राइस कैसे डिस्कवर होता है? Now the 90% of contracts are signed up upfront.
A generator will set up a power plant. The lender of a generator who is financing debt will say कि भाई 25 साल का पीपीए करो, 10 साल का पीपीए करो, तो you don't have a market risk. But there is still a lot of temporal demand supply gaps जो market में spill होता है, which is the 7%. ये 7% डिसाइड करता है कि at what point in time डिमांड कैसा रहेगा, सप्लाई कैसा रहेगा, एंड रिजल्टेंट प्राइस कैसा रहेगा. द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर सप्लाई इफ वी टॉक अबाउट, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इंडिया इज एडिंग लॉट ऑफ रिन्यूएबल्स इन प्लेस नाउ. आज भी अगर आप आईएक्स की प्राइस जाके देखेंगे डेली चार्ट, यू विल सी दैट आफ्टरनून आवर्स में देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई अवेलेबल एंड द सप्लाई कर्व अगर आप देखेंगे इट विल मिमिक द सोलर कर्व, बिकॉज ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार मेगावाट अवेलेबल होता है आफ्टरनून में, तो वहां पे रेट आपका कम हो जाता है. नाइट आवर्स में रेट ऊपर चला जाता है, राइट, बिकॉज अब सोलर नहीं है एंड इनफ बैटरी नहीं है, एंड इलेक्ट्रिसिटी विच कैनॉट बी स्टोर्ड, आपको जो टाइम पे सप्लाई अवेलेबल है वही टाइम पे करस्पॉन्डिंग डिमांड ढूंढनी है. डिमांड मिल गया तो रेट फर्म रहेगा, डिमांड नहीं मिला तो रेट विल क्रैश. एंड सेम वे जहां डिमांड है और वहां सप्लाई नहीं मिला, रेट जाएगा ऊपर. तो अभी जो प्राइजेस है दे आर कैप्ड एट 10 रुपी. Talking about fundamental drivers, what moves the demand and supply? Supply, when you have more and more renewables, a huge dependency is on weather. Same way, demand is lot more complex in terms of influencing factors. Demand आपका weather की वजह से move होता है, economic activity की वजह से move होता है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेन की वजह से भी कई बार मूव होता है, जहां पे अगर पावर फ्लो नहीं अलाउड है तो आप डिमांड कर्टेल करोगे, पावर आउटेज करोगे तो डिमांड अचानक गायब हो जाएगा. कई बार पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से मूव होता है. इलेक्शन आया, पॉलिटिशियन को पावर देना है टू गेट बैक इन पावर, तो वो टाइम पे फिर लगता है कि अच्छा बहुत डिमांड आ गई, राइट. तो द डिमांड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आर मैनी. Given that the electricity is still kind of well contained within the physical domain, international influencing factors बहुत कम है, right? But it's a very complex movement of different parameters. जैसे दिवाली आई, दिवाली on Sunday and दिवाली on Tuesday will have a very different characteristic on the demand profile. और वही दिवाली पे अगर बारिश हो गई तो और भी impact आएगा. So all of these needs to be understood in order to figure out डिमांड का प्रोफाइल क्या है, सप्लाई का प्रोफाइल क्या है, मार्केट कंस्ट्रेंट्स कैसे है, एंड देन द प्राइस विल कम. So Vishal, what is in it for the retail traders for such a complex commodity like electricity? या सो एफएनओ की भी बात करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, निफ्टी इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट एंड ड्रिवन बाय रिटेल ट्रेडर्स. तो जहां तक मुझे समझ में आता है, आई थिंक द रिटेल ट्रेडर्स लव वॉलेटिलिटी, एंड इफ यू लव वॉलेटिलिटी, ऑफ कोर्स द वॉलेटिलिटी कम्स विथ इट्स ओन रिस्क एंड रिवॉर्ड. वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो यू कैन मेक more money by trading, and you can also lose equally more money by trading. But if you can handle volatility, ये एक ऐसी commodity है which is lot more volatile than crypto. Your equity nifty would move maybe 0.5%, 0.75% on an average a day. Electricity 10-15% move होता है on an average a day. Crypto उससे कम होता है. Okay. Yeah. So does the electricity market get influenced by international factors as well and the energy prices overall? So only to a limited extent. When, for example, India का 65% of electricity coal से आता है. A very tiny fraction of that comes from international coal supply regime. Now say if we do not have adequate coal and a lot of international coal has to be brought in, जो 2022-23 में हुआ था, तब थोड़ा प्राइस मूव होगा ऊपर. Other than that, the neighboring countries where we trade electricity like Bhutan, Nepal, Bangladesh, वो quantum बहुत छोटा है. So this is a very unique commodity that way, where the demand and supply is pretty much driven by domestic factors. The international price doesn't influence the overall price dynamics in the domestic circles, right? And
hence it is very important to look at this commodity completely in isolation from international factors, right? Considering that we have adequate coal, adequate evacuation, all of it, then कोई impact नहीं है. The other fundamental difference here is, आपको अगर मेटल बेचना है या इक्विटीज में ट्रांजेक्शन करना है, तो दे आर अवेलेबल एट सेम एक्सचेंजेस. At MCX, you can take a delivery of Jira or aluminum and also settle it financially. Purely in terms of market design, electricity market is designed in such a way, unless you are a genuine consumer of electricity, in the spot market, you are not allowed to take a buy position. You cannot financially square off your electricity transactions in the spot market. Same way, if you want to sell electricity, you must have a legitimate asset of that size to put a sell bid in the market. तो जो फाइनेंशियल मार्केट का कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे कि एनीबडी कैन स्टार्ट टेकिंग डिलीवरी, इलेक्ट्रिसिटी में वो अलाउड नहीं है. So no matter how big my balance sheet is, if I don't have a consumption base or a supply base, I cannot participate in spot. I can only participate in financial market. The other important aspect is now the spot markets are regulated by Central Electricity Regulatory Commission, जो इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर है. तो उनका डोमेन बहुत ही वाटर टाइट वे में डिफाइंड है कि एनीथिंग रिलेटेड विथ फिजिकल डिलीवरी ऑफ ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियली सेटल नहीं होगा वो उनके डोमेन में आएगा. एंड ऑल दिस ट्रांजैक्शंस विल गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. IEX cannot have a product which is financially settled. And the jurisdiction from the regulatory point of view will be the central regulator for electricity. The financial markets, on the other hand, will be purely governed by SEBI. And under SEBI, you have exchanges like MCX and NSE who will offer these products. So it's like a completely firewalled ecosystem. Only a true hedging entities like a distribution companies or a power traders or a renewable asset owner or any asset owner or a large consumer only can be present in both. And when it comes to MCX, electricity futures, there is no way you can take delivery, right? So these are all the nuances one can understand to decide how to participate. So now, Vishal, with all this news about Jane Street going around and the volatility that you just spoke about, can alleged manipulation like Jane Street happen in the electricity market? So very unlikely, and the reason for that is simply because you cannot move the spot market Okay. unless you are a very large buyer or very large seller. And there again, the governing rules, the power market regulation, the gaming and market manipulation practices are reasonably defined. And वहाँ पे अगर लगता है कि any large player is influencing the market, it's very easy to catch because that is the segment you don't have the luxury of tens of thousands of or few million users. It's a handful of participants. So unless you are a large player with an actual physical asset either on the supply side or demand side, आप वहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर सकते हो. यहाँ पे जो जेन स्ट्रीट का एग्जांपल है, क्या हुआ कि यू टुक पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एंड आल्सो काउंटर पोजीशन इन फिजिकल, एंड इफ यू मूव फ्यू स्टॉक्स लाइक निफ्टी 50 में एक दो पकड़ के उसको ऊपर नीचे करो एंड देन द फ्यूचर्स विल मूव, वो यहाँ नहीं हो सकता. So there is a fair degree of isolation by design, and the manipulation is very unlikely what we have seen here otherwise. Now, this is getting interesting, and I think everybody's going to be really interested to see what you have to showcase in your presentation. So please start off and please take us through, Vishal. Sure. So I have like just about 8-10 slides. अगर किसी को question है in between, please feel free to interrupt. We have adequate time and some interesting data points, and would be happy to answer whatever information I have on this subject. Yeah, can we see the presentation? Yes. Okay. So idea of the presentation is to not talk about contract का lot size क्या है, financial benefit क्या है,
The objective is इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलता है, वॉलेटिलिटी क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसको कैसा देखा जाना चाहिए, and that is what we will try to address in this segment. But before that, it's also important for the participants to understand where we come from. We are a software product company building a variety of softwares driven by AI and grid automation, where we predict demand, supply, price movement, automate the dispatch, optimize the dispatch for energy utilities. And recently we have started another platform called clickpower.in, and वहाँ पे idea ये है कि if we can aggregate a lot of demand from commercial and industrial customer, they can transit faster to get cheaper and cleaner energy supply. So that's the background. In terms of scale, we work with large number of renewable asset owners, and उनके जो wind और solar farms है, उनका entire predictive analytics, dispatch automation, settlement with the energy utilities, the energy what they produce, वो काम उनके behalf पे हम करते हैं. And वहाँ पे करीब करीब 1000 जितने wind and solar farms all over India, we have been operating through a platform called Grid Connect. Roughly about 36,000 megawatt of portfolio we are handling right now. And you can see that we get a lot of real-time data from all these assets to decide what is the most accurate production forecast you can get from this asset. Same way, energy utilities ke liye bhi, the host of softwares around predicting RE demand, automating the dispatch, financial settlement of energy transaction, we provide again across length and breadth of the country. And now we also have a few clients in Southeast Asia and Middle East. How do we work? So we basically work extensively on the data streams. Being a software company, we rely on the data origination from various sensors, starting from satellite, the SCADA systems जो plant level पे लगा है, various IoT sensors. The weather forecast becomes kind of fundamental ingredient. So again, we use multi-channel weather forecast all over India. And if you are doing demand forecasting, then variety of events, holidays, political event, extreme weather events, grid backdown, load shedding, all of that gets factored in, and the AI will take over from there once the data is synthesized, and the prediction will start coming on a intraday basis, on a day ahead basis, on a week ahead basis, on a season ahead basis, and so on and so forth. And based on सामने client कौन है, उनके हिसाब से उनको data and prediction और वो सब दिखेगा. थोड़े examples दिए हैं यहाँ पे, demand forecasting, how the demand kind of moves, and what kind of accuracy level we can expect. So the DA is for day ahead forecast. So like कल का power production और consumption कितना होगा, आज सुबह हम kind of predict करेंगे, and उसका accuracy measure करते हैं, intraday revision करते हैं, right? And you can see that the demand varies quite substantially between different days. This is a 1 full month chart, and intraday अगर करोगे तो you can correct your errors better. Same applies for renewable. So this is different grid systems, 12,000 megawatt of renewable grid, wind and solar combined. And you can see that even on day ahead basis, the forecast is pretty accurate. The falling trend in generation, the rising trend in generation, across all the months, you can see that there are different patterns. And our job is to identify those patterns and see that we make least errors possible. Of course, forecast being forecast, there will be errors, but the objective here is to minimize the errors from day ahead and all the way to intraday. Now, coming to your one of the earlier questions, demand supply कैसे move होता है and what is the influencing factor on price? तो ये 2022 का डेटा है. You can look at the green area curve, energy demand at an India level, right from April all the way to March. You can see that it keeps varying. Monsoon में demand कम होती है, renewable supply बढ़ता है. For example, you see June, July, August. So your wind production goes up, your hydro production goes up. In terms of renewable, ये 2 साल पुराना डेटा है, but what you can see is there is a massive headroom for growth, right? And this is end of day data, not a 15-minute data, but there is a lot more renewable we can accommodate. Now influencing factor अगर देखा जाए, the dotted line is previous year data.
नाउ रेट आप अगर देखें, जो फ्यूचर्स की बात करें, तो इस साल एवरेज मंथली रेट इफ यू सी 3.7, 2.8, ऑल ऑफ सडन इट स्पाइक टू 8 रुपी. ना कोई बोलेगा डिमांड अचानक बढ़ गई क्या? इफ यू कंपेयर 22 एंड 21, डिमांड में कोई सरप्राइजेस नहीं थे, बट बिकॉज वी हैड कोल शॉर्टेज, it was very different reason for market price to go up. Same way, if you see how cyclone can affect your price, जब cyclone ताउते आया, the demand crash, the price is also kind of softened, right? The two cyclones were together, and again by December when there was a demand spike, if you see the dotted line around December, there was a sudden demand spike. This was March actually, the March 22, and there again we had a 8 rupee price going. So the price spread, if you see, all the way from 2.8 till 8.23, this is monthly average, and there will be days where the rates will be lot high. State to state dynamics थोड़ा change हो जाता है, because there the energy system is smaller. जैसे लॉकडाउन हुआ, there was almost 25-30% demand drop immediately. उसमें भी अगर आप साइक्लोन और वो लगाओ, तो again it makes an impact of holidays like Dashera, right? So Tamil Nadu में कम impact रहता है, but if you go to other larger states where the festival is celebrated in a big way like Karnataka, you will see a sizable impact of Dashera. And then the cyclone आके चला भी जाता है, but the demand effect continues to hover around for a week, right? And again, if the large holiday is kind of coupled with that, it will have a very different behavior. So all of these factors move your demand, and supply is of course moved by various constraints like coal availability and all. And similar example for Karnataka, which has lot more hydro, lot more wind, lot more solar, and you can see that, from lockdown to cyclone and sudden spike, right, the Diwali drop, all of that you can see. Coming to how the market is today, यहाँ पे 3 साल का प्राइस कंपेयर किया है, Jan to October, just to bring some perspective how are we trending now. अगर किसी को प्राइस पे व्यू बनाना है कि करंट प्राइस जो चल रहा है फ्यूचर्स में, शुड आई गो लॉन्ग और शुड आई गो शॉर्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग टू लुक एट कुड बी कि डेटा देखते हैं प्राइसेस मूवमेंट कैसे हो रहा है. 23 का कर्व आप वेक्टर देखेंगे तो द ग्रे लाइन इज व्हाट द 23 डेटा. यहाँ पे prices were quite high, there was a sizable coal shortage, and the demand had also kind of picked because of all the manufacturing uptick and all, and the rates were quite firm at power exchanges. 24 में थोड़ा change हुआ where sizable RE supply started growing, the demand also kind of got stabilized, and you can see that throughout a year barring 1 or 2 months the rates were lower. तो 24 में डिमांड ग्रोथ हुआ, रीजनेबल हुआ, बट सप्लाई ग्रोथ अच्छे से हुआ. द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकर्स ensuring that coal is available, supply is not short, all of that was taken care of, and you can see that the prices were far lower in 24 than 23. 25 की अगर बात करें तो it's again driven by few factors. Monsoon has been good now so far. It in fact advanced in May. तो May का अगर प्राइस देखोगे बहुत कम है. 24 में the summer was little intense across multiple pockets, Karnataka, some of the western region pockets, and hence the prices kind of firmed up during that time. But this year the monsoon prediction is that we are expecting 103-105% average monsoon across India. And अगर monsoon अच्छा रहा तो आपका renewable supply अच्छा रहेगा, more from wind. सोलार पे कम इम्पैक्ट रहता है, तो सप्लाई आपका अच्छा रहेगा, डिमांड ग्रोथ कम रहेगा, बिकॉज व्हेन द वेदर इज गुड द एसी लोड एंड ऑल गोज डाउन, इफ द रेन इज गुड द एग्रीकल्चर लोड गोज डाउन, तो एनर्जी यूटिलिटीज के लिए डिमांड कम हो जाती है. एंड द रेट फॉर 25 यू सी बाय एंड लार्ज अगेन वी आर ट्रेंडिंग लोअर देन द प्रीवियस ईयर. अच्छा मॉनसून है, आरई सप्लाई काफी तेजी से बढ़ रहा है. लास्ट ईयर हमने करीब करीब I think 30,000 megawatts of renewable supply add किया, largely led by solar and followed by wind. इस साल भी trajectory is looking very good. अगर आपका डिमांड 6% या 6.5% से ग्रो हो रहा है and renewable supply and the other supply grows by 10-15%, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखेगा. एंड स्टार्टिंग लास्ट 2 years बहुत सारा स्टोरेज भी आ रहा है. तो अभी इवनिंग में जो हम 10 रुपए का रेट देखते हैं, अगर मोर एंड मोर स्टोरेज स्टार्ट्स गेटिंग एडेड,
तो वहां पे भी थोड़ा एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट होगा मार्केट प्राइस में. कमिंग टू द सेटलमेंट, हमारा एक्सपायरी पे सेटलमेंट के किससे होगा? सो हर रोज का प्राइस जो होता है उसका एवरेज लिया जाता है वॉल्यूम से वेटेड एवरेज करके, एंड हेंस ईच डे द प्राइस मूवमेंट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड कि आज जो रेट डिस्कवर हुआ वो तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले दिन में क्या हुआ, that is also equally important. So overall, if you see the data, it suggests that we are better placed as a country where the supply is adequately taken care of, and we are looking at not many surprises when it comes to market prices. This is the last slide. Now, how do you view electricity purely as a commodity from the trading perspective? तो बहुत सारे फोरम में बात होती है कि चलो कमोडिटी तो अलग है, बट वॉलेटिलिटी कितनी होगी, राइट? The volatility is measured from the standard deviation and then you apply square root of number of days. Uh, the traders who are active in crypto, they would know that crypto runs 24/7. It doesn't stop, and a hugely volatile kind of commodity आप बोलो या underlying बोलो, उसका जो एवरेज डेली वॉलेटिलिटी है या वेरिएशंस है वो 4 से 8% की रेंज में है. इलेक्ट्रिसिटी उससे डबल है. एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी आप अगर कंपेयर करो डिफरेंट coins like Bitcoin and the low liquidity coins like Solana and XRP and so, ये एक डायरेक्ट रेफरेंस लिया है एंड यू कैन सी दैट 100 से 150% के बीच में इनका एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी रहता है. इसको आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करेंगे, मंथ ऑन मंथ स्टैंडर्ड डेविएशन आप अगर 2023 का ले ले या 24 का ले ले या 25 का ले ले, करीब करीब 20% आता है. सो व्हाट इट मींस, डेली प्राइस मूवमेंट आपकी 15-20% के रेंज में ऊपर नीचे होती है. एंड उसको अगर वॉलेटिलिटी में ट्रांसलेट किया जाए कि एनुअल वॉलेटिलिटी एंड मंथली वॉलेटिलिटी, सो मंथली वॉलेटिलिटी आपका करीब करीब 100% के बराबर है. The price trend we saw in the previous slide, price trend is a declining trend. The volatility is a growing trend. And ये क्यों हो रहा है? Because now there is a lot of renewable that is coming in. The ability for grid to absorb all of that when it's available and also manage the balance when that is not available has made grid operations very complex. तो आप अगर यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे काफी उल्टा है कि your volatility has started rising much higher month on month basis and annualized basis पे भी आप 300% के आजू बाजू volatility देख रहे हैं. So overall it's a huge hugely volatile commodity. Those who can handle volatility, only those should look at commodities like this, because upside risk, upside benefit and downside risk both are very very large. Influencing factors बहुत complex है, right? The only silver line here is international influence नहीं है, but within domestic it's fairly complex to kind of relate कि पैन इंडिया वेदर कैसा है, डिमांड क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कहाँ चल रही है, ग्रिड कैसे चल रहा है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट है कि नहीं है. एंड लाइक क्रिप्टो, द स्पॉट मार्केट रन्स 365 days 24/7. तो हमारा भी जो काम है, whether it's with COVID, without COVID, our work cannot stop, our office cannot stop. And the power markets are also run exactly like that. No single holiday. And the another interesting aspect जो हम पहले भी डिस्कस करे थे, which is like it's fully decoupled from spot. So very interesting commodity overall for anyone to look at, learn, and also find an opportunity to trade and benefit. And of course the benefit would come its own set of risk. So अगर question है तो happy to answer now. Yeah, I think there's just a couple of questions. This whole set of presentation was very, very interesting. It's actually opened a lot of eyes into what's happening and what's going to be the future of electricity. Just a couple of questions. So how is this helpful in hedging, as it's helpful only on the expiry days and not on other days? So if you could just explain that out to one of our viewers. Right. So hedging की अगर बात करें, you need to be a physical asset owner where you are either consuming or supplying electricity. Now,
जो हमने पहले एक डिस्कशन किया कि करीब करीब 90% पावर पहले ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका टाई अप हो जाता है, तो वहां पे आपका मार्केट रिस्क नहीं है, राइट? तो हेजिंग इज नॉट अ डोमिनेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्लेयर लाइक दैट। बट अब क्या हो रहा है कि बी इट रिन्यूएबल और इवन थर्मल, देर आर प्रोड्यूसर्स हु आर deliberately carving out some capacity for market। कि मैं 1000 मेगावाट लगा रहा हूं, मैं 200 मेगावाट मार्केट फेसिंग रखूंगा। आई माइट हैव डाउन साइड, आई माइट हैव अपसाइड, एंड यू टेक योर ओन कॉल। Same way, the distribution companies also, they tie up sizable quantum in long term through various power purchase agreements, but उनके daily requirements रहते हैं। एंड अगर IX की बात की जाए, 10 से 12 हज़ार मेगावाट हर 15 मिनट में ट्रेड होता है, लार्जली ड्रिवन बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनके भी डेली रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। हेजिंग कम्स इनटू प्ले फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स कि मान लो आपका 5000 मेगावाट या 2000 मेगावाट का मार्केट एक्सपोजर है, अभी रेट यहाँ पे चल रहा है, डू यू वांट श्योरिटी इन योर रेट? अगर आपको लग रहा है रेट ऊपर जाएगा, एज अ प्रोड्यूसर यू विल नॉट वांट टू हेज इट, बट एज अ डिस्कॉम यू विल वांट टू हेज इट कि भाई मार्केट में स्पॉट में मैं यहाँ पे एक्स रुपये पे कर रहा हूँ, आई विल टेक अ काउंटर पोजिशन सो दैट इफ माई स्पॉट प्राइस गोज अप, the position I take in financial market, there I will benefit, right, by taking a counter position। तो मेरा नेट नेट जो रियलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बना रहेगा। बाकी आप और मेरे जैसे प्लेयर के लिए वी कैन नॉट डू एनी हेजिंग। इवन एट अ हाउस होल्ड लेवल आवर प्राइसेस आर नॉट लिंक्ड विद मार्केट। अगर मैं बैंगलोर में हूँ, बेस्कॉम मेरा सप्लायर है, मेरा टैरिफ फिक्स्ड है, देयर इज नो नीड, इट्स लाइक टाइड अप फॉर एवर, राइट, अनलेस आई स्टार्ट गोइंग टू मार्केट एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। So the hedging is a play where the actual buyers and sellers of electricity could truly benefit in terms of de-risking their position. Okay. All right. So we have another interesting question. So if the solar energy drops in the evening, who ends up covering that gap, and can they actually trade that risk? So, I mean, very interesting question. Now, electricity at scale storage अभी limited मात्रा में available है। So what happens there is, even if you go to IX and see कि demand supply and price movement कैसा है, आफ्टरनून आवर्स में यू विल सी लाइक 30-40,000 मेगावाट बिड्स अवेलेबल फॉर सप्लाई। उसके सामने आपके पास डिमांड रहता है 3-4 हज़ार का। हाउ डू वी कवर एट अ नेशनल लेवल नाउ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले थर्मल पावर प्लांट्स थे, उनका मैंडेट ये था कि अगर 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, वो 75 मेगावाट से नीचे नहीं ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो टाइम पे हम शॉर्टेज सिनेरियो में जी रहे थे। एट एनी गिवन पॉइंट वो टेक्निकल मिनिमम बोलते हैं। जैसे जैसे रिन्यूएबल बढ़ना चालू हुआ, उनको 55% पे ले आए कि भाई तुम 55% पे ऑपरेट करो। तो आप 100 मेगावाट पे है, आप 55 पे भी जाओगे और 100 पे भी जाओगे व्हेन वी टेल यू। वो अभी 35% पे लेके आ रहे हैं, राइट? तो नाउ रिन्यूएबल एक ऐसी चीज है जहां पे इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, तो यू डोंट वांट टू वेस्ट इट। प्लांट लगा है, अगर स्काई इज ओपन एंड ब्राइट, यू वांट सोलर पैनल टू वर्क एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयला आप बचा सकते हो। सेम अप्लाइज फॉर विंड, हवा चल रही है तो आपको विंड टर्बाइन चलाना है। So that is where what has started happening now is the utilities will procure a lot of power from renewable also in long term basis, but उनको डेली डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो मार्केट में इसीलिए आप 30-40 हज़ार मेगावाट के बिड्स देखते हो, बहुत सारे आर कमिंग फ्रॉम यूटिलिटी कि भाई डाल दो, अगर ये निकल गया तो मार्केट से मैं रेट ले लूंगा, नहीं निकला तो मुझे सोलर तो लेना ही है, आई विल स्टार्ट बैकिंग डाउन माई थर्मल। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रात को पावर अवेलेबल नहीं है। अब रात को पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो जो लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है वो आप सीधा 10 रुपए पे चला जा रहा है। तो पावर रेट्स इफ यू सी, द इंट्राडे वेरिएशंस आर एनीवेयर फ्रॉम से 2 रुपी टू 10 रुपी इवन टुडे, एंड इफ देयर इज अ साइक्लोन एंड डिमांड क्रैश फर्दर, वो 0 रुपी भी चला जाता है। Correct. There's another interesting question. It says, which states do these electricity prices futures, which states do they follow? Or how are they priced out? No, come again. I couldn't understand the question. So which states DAM prices, these futures, do they follow which prices? Is So it in based on futures, we states? follow national level price and not a state specific price. Okay. उसमें भी एक जो टेक्निकल निटिग्रिटी है कि पावर फ्लो हैज टू हैपन वाया फिजिकल ट्रांसमिशन लाइंस।
तो डिमांड सप्लाई जब आप नेशनल लेवल पे अप्लाई करते हो कि मान लो आपके बीट्स आए कर्नाटका से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, इधर असम से, गुजरात से, सबको बंडल किया और वो 15 मिनट में आपने एक ऑक्शन रन किया कि भाई टोटल डिमांड टोटल सप्लाई इकोनॉमिक थियरी लगाओगे एंड मान लो कि 10,000 का सप्लाई था, 15,000 का बाई था, प्राइस के हिसाब से 7,000 मैच हो गया। बट ये हो सकता है कि बिटवीन गुजरात एंड कर्नाटका द ट्रांसफर, मान लो कि 2,000 मेगावाट का ट्रांसफर चाहिए, आपको कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिशन इज अवेलेबल ओनली एट से 1,000 मेगावाट लेवल। तो क्या होगा कि अब गुजरात को सप्लाई करना है, गुजरात के पॉकेट में डिमांड कम है, कर्नाटका को सप्लाई चाहिए, उसके यहाँ सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो कर्नाटका का प्राइस ऊपर हो जाएगा, गुजरात का प्राइस नीचे हो जाएगा। तो मार्केट का अनकंस्ट्रेन्ड जो क्लियरिंग प्राइस है, जो हम यहाँ फ्यूचर्स में रिफर कर रहे हैं, दैट माइट बी एट 5 रुपी, बट कर्नाटका में एंड अप पेइंग से 8 रुपी एंड गुजरात में एंड अप रिसीविंग से 3 रुपी। तो इसको कंजेशन बोलते हैं। टू सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शन, फ्यूचर्स में जो प्राइस रेफरेंस लिया जा रहा है वो अनकंस्ट्रेन्ड वॉल्यूम का ही लिया जा रहा है, सो दैट इट्स मोर रिलेटेबल, बिकॉज अदरवाइज द इम्पैक्ट इज वेरी नॉन लीनियर एंड दीज आर not very easy to predict aspects. Okay. All right. So we have another question: is how can somebody actually protect themselves from sudden spikes in power costs during festivals and peak seasons, and how do they circumvent that? So, I mean, this is a broader question for the utilities who are exposed to market. Also, the traders who would want to kind of, take a bet in the futures. The only way to kind of understand this is driven by a lot of data. The markets have opened just now, so we are also kind of consolidating a lot of data, building our own hypothesis. I think within few months, uh, more such platforms will start coming up, having a more curated data streams which can make it easy for someone to understand कि डिमांड में क्या हो रहा है, सप्लाई में क्या हो रहा है, मूवमेंट कौन से फैक्टर से हो रहा है, राइट? जो यूटिलिटीज टू सम एक्सटेंट दे अंडरस्टैंड, बट a lot of AI and a lot of science will start going into it, because the kind of money that will move through this market, the futures, will surpass the physical spot very soon. कल का जो ट्रेड हुआ करीब करीब 35-40% लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है डे वन, कि जो आप स्पॉट में डिलीवर होता है ऑन डे वन वी हैव रीच लाइक सम 30-35% ऑफ द वॉल्यूम्स जस्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ फ्यूचर्स, एंड अभी एनएससी तो चालू हुआ नहीं है। So you can only imagine you will have much deeper futures market than what is there in spot. We have another one where you're talking about India's aiming for 500 gigawatts of renewables, but how do we even manage that much of green energy like without chaos? Chaos is inevitable when you talk about grid, and the only way to reduce chaos is basically two aspects. You understand the chaos in greater granularity, जहाँ पे all the predictive analytics, demand forecasting, price forecasting, RE forecasting, that is the level one. The level two is your fallback mechanism. So the storage plays an important role. अब chaos कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो आपने मेन स्ट्रीम रिन्यूएबल देख लिया जो ग्रिड कनेक्टेड है, वेरिएबल। सेकंड बड़ा chaos आ रहा है क्लाइमेट चेंज से। अभी इस बार मई का आपने देखा होगा रेट जीरो चला गया मार्केट में, क्यों? क्योंकि मॉनसून बहुत एडवांस में आ गया कुछ जगह पे, राइट? तो डिमांड स्पाइक जो एक्सपेक्टेड था मई में, आपने सप्लाई रेडी रखा था, डिमांड आया नहीं, तो रेट गिर गया, राइट? द थर्ड केओस विल कम फ्रॉम ऑल द रूफटॉप सोलर्स, कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला 1 करोड़ रूफटॉप लगाएंगे और वो लग भी रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एसेट अप एंड रनिंग है, कौन सा नहीं है? क्लियर स्काई डे में आपका डिमांड रहेगा नहीं रेसिडेंशियल यूजर के तौर पे अगर देखा जाए तो, बट जिस दिन साइक्लोन आए अचानक आप डिमांड मांगोगे यूटिलिटी से कि भाई मुझे पावर चाहिए आपसे। तो ये सारी चीज़ें, एंड चौथा लेयर है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एज अ हाउस होल्ड आपका एवरेज कंजप्शन माइट बी फ्यू हंड्रेड यूनिट्स अ मंथ, किलोवाट आवर्स अ मंथ। द मोमेंट यू पुट ईवी 3 से 4 गुना ग्रोथ हो जाता है। तो केओस के सोर्स अभी काफ़ी बढ़ गए। तो केओस को कम करने के दो तरीके हैं, एक है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, सेकंड इज स्टोरेज, कि आपका स्टैंड बाय कैपेसिटी हमेशा बना रहे। तीसरा जो डायमेंशन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो कंज्यूमर है उसको कैसे नच किया जाए,
कि जब ग्रिड को चाहिए पावर आइदर सप्लाई और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, द कंज्यूमर स्टार्ट ड्रॉइंग और इंजेक्टिंग, अगर प्रोज्यूमर हो तो, कि आपके पास सोलर रूफटॉप है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कैन यू कनेक्ट टू द चार्जिंग पॉइंट एंड डिस्चार्ज योर बैटरी इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं, एंड अगले 4-5 साल में देखेंगे तो ये सारी इकोसिस्टम पूरी खड़ी होगी। Batteries are moving fast, the flexibility market will open up, and it will make the market more comprehensive and equally complex. Okay. Really, really good eye opener for us. I'm just going to take one last question by somebody is asking, will electricity options be available soon? I mean, I'm not a right person to answer, but what I understand is if the futures have adequate liquidity, the number I have heard from few sources is like some 1,000 crore turnover a day, which is roughly about, say, 7-8x of the physical spot. My assessment is we might move there much faster, right? And I think India as a country, given where the FNO stands, I think we are a country of gamblers and speculators. Uh, so we might see futures getting coupled with options much faster. This is really, really interesting for us. Absolute eye opener. If you'd like to leave any of our viewers with a last one-liner for the electricity futures, what would that be, Vishal? More than electricity futures, I would say, or rather, place a comment on the future of energy. In the future of energy, few decades down the line, if you see, it will all revolve around electricity. And electricity will be your singular source of energy. चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या प्लेन में जा रहे हो या आप एनी अदर फ्यूल, लाइक अभी ग्रीन एमोनिया पे काम चल रहा है, राइट? So electricity will be the commodity and source of energy for future, and given that, the futures market for electricity is a lot more exciting. The growth of market will only compound pretty much exponentially, where your oil and coal and other things will start slowly diminishing, and more interest, this segment will start gathering, and hence very exciting times. All right. Thank you, Vishal, for such a thought-provoking and insightful session. You've helped demystify how India's electricity market really works and how technology, weather, and the renewables are reshaping the future of energy trading. So to everyone who's joined us, thank you for being part of this session, and we hope you found it valuable and gained a clearer perspective on the evolving dynamics of the power market. We look forward to seeing you again in upcoming webinars, and until then, stay curious and stay connected. Thank you, Jeffrey. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, Vishal. Bye-bye. Bye.